شو تبيات كوبافة تيرك ودقي يوتي بها خراب وزير سنبا سارم كساكوني بيوندن فديك قيلاه توني وزويوندن مثلا اوتي معاذ وزن كباس ويز دا خان إلتو غاتبم درايان دي غاف شيلاج وز بويزن دسابن زقجاي دنامي جاي التورف زير سنبام كي مال خالص بويرفت وز تو هال دم خونر نية وز بويزن دسابن أما الحالة ليت أو ديد غنزازي تشتتيد وز بيزن بشورة تشتوي ميشوي In the remote isolation of Shimshal, medical help means a treacherous 3-day-long journey, sometimes the difference between life and death. But little Naima's parents can no longer keep hoping for a miracle. They know she must be taken to a hospital as soon as possible. يعني شوف ليفوست خريانا رايون با بيركيني يوندن زمان نقول تاكن خدام وفاندن يعني. مش خات بك وقت علاج وقتي علاج وقت عينري علاج ناس dat poppen zit ook komt pak jara netto padam kuice men giltiot wacht bak is kam jai padam yunden het was a pergadinishin. Since the under-construction road connecting Shimshal with the Karakoram highway is partially through, Arab Khan and his brother think it may be possible to reach the nearest hospital in Gulmit within a day, provided a jeep picks them up from the road camp, which is almost halfway. Bibi Mama hopes that their message has reached the volunteers at the road camp. سهرني توكل كيف بس تايدين با volunteer scout يتش فومداد سارن تم نبغاتنا نيكيم ني سمرتيدي يا غادير بديك سهرن سات بجا فيترون سهر نوريتشن
The volunteers are already waiting for them at Cook. From here, they will carry the patient across the next stage at a much faster pace to the road camp, where a jeep is waiting to drive them to Gulmit. So far, Naima seems to be faring well. With a little more luck, she should be able to reach the hospital by nightfall. Before the road construction started, this journey would have taken up to 3 days along a much more dangerous route. But due to the tireless efforts of the community, the jeep road connecting Chimshal with the Karakoram highway is nearing completion, and the curse of isolation will soon be lifted. Earth, wind, fire and water. The elements of nature have always posed the toughest challenges to the mountain people. But today, man's quest to harness these very elements has led him to discover their true potential. Up until recently, these mountain communities in the north of Pakistan were left far behind the rest of the world due to a lack of basic communications infrastructure. But today, motivated communities are going through a much-needed transformation. Driven by a common goal, the collective spirit of these people has helped them move mountains. Today, many remote villages like Chimshal are connected to the highway by jeepable roads and bridges. रास्ता अभी तो फिर भी बन गया है, पहले तो बहुत चढ़ाइयाँ थी, अभी तो एक भी नहीं चढ़ाइयाँ। शुरू जब होता था तो चढ़ाई इसलिए शिमशाल तक चढ़ाई था। तकरीबन 5-6 दिन हो रहे हम इधर आए हैं। अपनी मर्जी से आते हैं, जिसकी मर्जी है, छोटे हों बड़े हों, सब आते हैं इधर काम करने। जितना दिन का काम है, अभी पुल अभी जब तक नहीं बनेगा तो हम लोग इधर ही हैं। 1-2 दिन इधर जाएंगे, 1-2 दिन पुल के पास गुजारेंगे ऐसे। 2 महीने में अगर ये पुल बन जाए तो हमारे शिमशाल के जो ट्रैक्टर है वो क्रॉस करके नीचे या गर्म चश्मा से भी आगे जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का जो 3-4 पुल है उसमें टाइम लगेगा। इंशाल्लाह इस विंटर में पानी से वो क्रॉस करते गाड़ी थ्रो हो जाएगा। To evoke a sense of ownership, the communities are encouraged to identify the required projects themselves by sharing the cost and taking complete responsibility for the construction and maintenance of these projects. Communities are able to ensure efficiency and transparency. Successful completion of the communications projects not only connects these communities to the rest of the world, but also brings the people closer together.
Fadik, Zinga area is tourist point in Kisak Sadram, campsite Bukakabaswezen, hotel type of Bukakabaswezen. The village organizations, which are formed to manage these projects, meet regularly, discussing further projects for the future. Women participate actively, as well as the village elders. At times, this sharing of ideas results in unique solutions to particular problems, like the Khush chairlift project. मगर हिस काफी नो इस पर से है सिला चरितन बेचार तो क्या है यानी एजुकेटिंग सिस्टम आवाम एजुकेट को कोई सिस्टम आवाम तादाद आगे यानी ज़्यादा बावबी नो नस्ल निसाव गोई करके की तरक्याती सिस्टम शेर आवाम सूरा बिता हमी तंजमा सूरा बिता Communication is not always the main problem for these areas. Booni has had metal road access to the central market town Chitral since the early 1980s. The villages in the valley have grown closer together, and the cluster is now developing into a small town. Here, farmland is under pressure from both the increasing population as well as the mushrooming growth of buildings. To get the best possible value out of the available land, farmers here have been trained in model farming methods since 1984. बस गुजारा भी नहीं होता था। जितने हमारे फल फ्रूट है ये बेकार जाते थे, माल मवेशियाँ खाते थे, इनको फरोख्त की मार्केट नहीं थे, मार्केट को समझ नहीं थे। जब AKSP आए उन्होंने मार्केटिंग में हमें ट्रेनिंग दिए और सारे कैश क्रॉप बना दिए हमने। कैश क्रॉप्स में जरदालू है, सब्जियात हैं, इसी तरह ताज़ा फल हैं जो नीचे गिरते हैं, इनको हमने जेम जेली बनाते हैं। कोई भी चीज़ फालतू ज़ाये नहीं करते, हर एक चीज़ को अच्छी तरह ड्राई करते हैं और ड्राई की काफ़ी कीमत भी होता है। इसी तरह मेरे शहद की मक्खियाँ हैं, 4-5 मन शहद निकालता हूँ। Apart from increasing the efficiency of the existing farms, more land needs to be developed in Booni to secure the future of the coming generations. The peaks above Booni remain snow-clad, ensuring an abundant supply of water all year round. At the foothills of the Donu range, there are vast pastures ready to be cultivated. An irrigation channel was planned in 1985 to claim the Shipashun pastures for farmland. Starting from close to the mouth of the glacial stream, some 17,000 feet above sea level, the site was only accessible for 3 months in a year. पहाड़ों का ये सिलसिला ऐसा था कि यहाँ कोई भी जा नहीं सकते थे। तो हम जब इंजीनियर को यहाँ लाया तो वो स्टेपनी पर आके कह दिया कि भाई ये तो बस की बात नहीं है, ये नामुमकिन है। फिर हमने इसको लेके उस साइड वादी के उस पहाड़ों के उस सिलसिले में जाके उसी सिलसिले से दूरबीन से हमने सर्वे कराया कि भाई कहाँ से हमने नहर निकाली। यहाँ 9,500 फुट बुलंदी पर काम स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 2 कंप्रेशर मशीन थे। सबसे प्रॉब्लम हमारे लिए यह था कि बोनी का कोई शख्स भी पहाड़ में काम करने की तजुर्बा नहीं रखता था। चरण से हमने एक आदमी को ड्रिलर को बुलवाया, वो यहाँ आकर ड्रिल कर रहे थे। तो फिर हम अपने बंदों को सिखाने के साथ साथ काम भी करा रहे थे उनसे। फिर जब दूसरे साल आया तो बोनी के सारे लोग काम करने लगा और उनका तजुर्बा हुआ कि पहाड़ में किस तरह काम किया जाता है। फिर हमने हिम्मत से काम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वक्तन फ़ौक्तन हमें सीढ़ियाँ इस्तेमाल करना होता था। कोई 20-25 गज ब्लास्ट के लिए ऊपर जाना, तो ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं था। उस रास्ते के लिए हमने सीढ़ियाँ लगाकर वहाँ जाके ऊपर जाके ब्लास्ट करते थे। इसी तरह करके जाके 10 साल में 28,000 फीट हार्ड रॉक कंप्लीट हुआ है। ज़्यादा लोग यही कहते थे भाई ये नामुमकिन काम है, कितने आदमी यहाँ मर जाएंगे, कितने आदमी यहाँ गिर जाएंगे, कितने जख्मी होंगे। मुश्किल तो कई आए हैं, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने आकर कहा कि जी पहाड़ जो है वो स्लिप हुआ। 40-50 जो बंदे काम कर रहे थे वहाँ पर एक पहाड़ की स्लिप के जद में आए। तो यहाँ से दौड़ लगा के पैदल के 2 घंटे का रास्ता हमने घंटे में तय करके वहाँ गया। तो 2 बंदे हमारे जो थे वो जिनकी डेथ हो चुकी थी, बाकी सब खैरियत से थे। इस दिन को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। बाकी छोटे मोटे तकलीफात आपस में हमारे इख्तिलाफात आ जाते हैं, तो छोटी बातें होती हैं। महीने दूसरे महीने के जब बाद जाकर हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्या पहलवंदा तन है आबादियन होते दोए ना
8 of the 14 village organizations in the Buni cluster have shares in the project. In the last 2 years, it has taken 3 failed attempts to finally reach an agreement between all parties on the mode of distribution. Ali Nur Shah, Sayyid Hassan Shah, Shatalib, Hassan Goli, Shabul Azam, Khalif al-Rahman, Darvish Ali, Nigah Shah, Salim Zar, The long wait is at last over. Today, finally, the land will be handed over to its deserving and rightful owners, and the hopeful faces of these farmers say it all. شپیشنو که irrigation که است که تحت آباد باغ که زمین کشه هست این جگه این کشونه د پلات 1994 دیو فریست مطابق هلو ان سوس پر راځي مطابق جو به ودو جو تراګان صدر شمالات شریک یې نو غره دا سات Next, Mohammad Nizar. Mohammad Nizar. Nizar udah kagak nular. Bukan akan kia. Mohammad Nizar. Nizar li goman rahu. Kana mete. Manzar jo. 18. Bulbul Nadir. Kut 18 hoy. Ini gulab show. Bulbul Nadir. Ini goke mo. Cutting through 28,000 feet of solid rock, it took 15 years to complete the 34,000-foot-long Shipashung Channel. Still, the technical difficulties of the project were not as big a challenge as the social ones. تا زمین را شیر تا زمین شیر تا زمین تارو نه تارو نورسن اینجا جنجال پیدا مو هي حفظوا زلوان نيكي اما شرات وصل هاي همول لدي ما همول لدي ما دارو باش على لو شوي تاع زمين بيمشي كورا شيء بين فوق اسم الروادي انسانيات وانجلي حال ديك كومو كورا لا تتصل بي تو انسان كو كوسو ما قلت بروجكت قال تو دي بوينات براي قال شو تو بروجكت Having resolved the last petty issues, everyone is satisfied with the distribution. In all, 2,400 canals of new land have been equally distributed amongst 570 households. معمولی جنجال جیسا از اینگار تا جذباتی بنیان جذباتی نو بیلی اته اینا رو تا سوچ کریلی جگلا کری بالکل غلط آیا قسمت کرم قسمتو کوست جان صحیح زمین گوی کوست خراب زمین گوی मेहनत को लिख जरूरी मेहनत के है दी जान हानि खुशान को खुशान न बोसन हां से कमार कमाया 5 टके की बे 5 लाख रुपया शुमा माह का फायदा खुशान Apart from building channels, siphons and pumps for irrigation, a number of protective works have been built along the riverbeds. Since 1984, thousands of hectares of land has been developed for irrigation in the northern areas and Chitrab, benefiting households in hundreds of villages. Some of them had none or very little land prior to the completion of these projects. An increase in the land holdings per household has had a significant impact on reducing poverty. Average livestock per household has increased by an increase in the growth of fodder. And expense on fuel wood has decreased as a result of farmers growing their own stock for an all-year-round, self-sufficient supply of fuel wood. Farmers have access to better seeds,
which has improved the choice of crops and increased the yield. The available link to nearby markets has improved the scope for cash crop farming. Vegetables, especially potatoes, are now a popular cash crop. The newly discovered potential of these villages has not gone unnoticed in the nearby urban centres. In central towns like Gilgit, small industries have come up, working in partnership with the farmers. Especially the untapped produce of large quantities of fruit is now being channelized to extract better profits. हम लोग फार्मर्स को गांव में जाके उनके डोर स्टेप्स पे ट्रेनिंग देते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से काफ़ी मुख्तलिफ है। एक इस लिहाज से कि हम इसको जो ड्राई करते हैं काफ़ी इम्प्रूव्ड ड्राइंग इक्विपमेंट से उसको यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा गांव के अंदर हमने मास्टर ट्रेनर्स को तरबियत दी है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बाद में हर गांव के अंदर या एटलीस्ट हर वैली के अंदर ऐसे ग्रुप्स पैदा होंगे जो कि इस बिज़नेस को टेक ओवर करेंगे। तकरीबन 600 से ज़्यादा फार्मर्स को गिलगित और बल्तिस्तान में हमने ट्रेन किया हुआ है और लास्ट ईयर तकरीबन हमने 27 टन के करीब जो है ना एप्रिकॉट प्रोसेस करके हमने एक्सपोर्ट किया है यूनाइटेड किंगडम में। और इस साल हमारा प्रोग्राम है तकरीबन 50 टन्स फार्मर से हम परचेज़ करेंगे और इस नए फैक्ट्री में जहाँ पर तकरीबन 100 टन्स की कैपेसिटी है यहाँ पर हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ का खुबानी के अलावा और भी बहुत से फ्रूट्स हैं जो बहुत ही पेरिशेबल, तो इस वजह से हमने ये सोचा कि इसको क्यों न फल बना के प्रिजर्व करके शेल्फ लाइफ दी जाए और इसको ज़ाया होने से हम बचाएं। मेरे पास पल्पर मशीन है एक ये बड़ी, तो इनको मैं ले जाके ये ड्रम्स को मैं ले जाके उसी बाग में ही उन ज़मींदारों से मैं वहीं के वहीं उधर से तोड़ते हैं लाते हैं, उनको मैं पास्चराइज करके पल्पिंग बना के ड्रम्स में उसको प्रिजर्व करके मैं यहाँ ला के प्रोसेस यहाँ करता हूँ। यहाँ पर मैं जाम्स बनाता हूँ, कंसनट्रेट्स बनाता हूँ, जूसेस बनाता हूँ। This promising urban-rural partnership between the villages and their nearby cities is entirely dependent on the Karakoram Highway. Since its inception in the 1970s, the highway has been the primary agent of development in the entire region, and improved access to remote villages and valleys has extended the reach of this development. نفسك تعمل قدرت لكن تعمل نشاط بخضر قواد سكية لاي بيت يا زوج كويس ده ساكن نشاط هذا تنكي راد بتنكي نشوف كوازم سبادا مش كوبتي ده أنا مولار شوف أول مولار ناردنا سباتات بريت بناردن يوم بنيادن مولار كل شيء سباتات بدرات كده. Water and Sanitation Extension Program has brought drinking water to the doorstep of thousands of households. And Building and Construction Improvement Program has introduced improved heating and insulation methods that can reduce the ill effects of smoke and increase the efficiency of fuel wood by up to 60%. All these factors combined has resulted in the average increase in per capita income by 80 to 100%. Bishal gute mimar projected miyabanke kultum gun khashiner han galguan tum insan shakalar badal bimanan ye teru banmi akurun ma tasawuratin ke gute labz bishki labzan blake to mi but intihai taklif lobam kultum gun kha akolar gan mer clear apim kulto taip dishener badal bimanan ke bishal tutang tum sangar dimeban और इनते खुद पैर बन में सनन कुल तकम्बला Microhydel power generation is ideal for remote mountain regions. To keep it economically viable, AKRSP started by putting up small capacity units so that their maintenance would be affordable for the village organizations. Capable individuals from the communities are properly trained to run and maintain the plants. The 100 kVA microhydel unit in Yorjo started working in 1996 and has been well looked after by the local technician, Gul Ahmed. وحس इस्पत तकलीफ पैदा हो ज़्यादा खर्चा को या तकन दे लिए वादा तो बचा मिस्तेरा सुसी
This extraordinary sense of ownership and commitment has been well rewarded. Making full use of the potential of the plant, the village organizations have managed to extend the maintenance fund considerably by selling connections to a village and some offices outside the cluster. Women's active involvement in the proper running and upkeep of the power plant reflects just how much they value the impact of electricity. These mountain women lead extremely tough lives. Their days are full of physically demanding and time-consuming chores. Although the capacity of the microhydel unit in Yorjog has limited uses, it has made a strong impact by creating more time in the late hours due to better illumination. Even more time can be saved from the tough daytime chores, some of which have been made easier and quicker with the help of electricity. वो फरक बा तांजीम साउथ बिती रोड सही होय बिजली इस्पत हाय रोस्ट होय अजेली ची के तालीम सबक रन्या इको तांग का मशीन सुइरान गया गईरान दुमिरान इजगा इको छिचरपी वहाते करू मानु बयान रगिस्ट्री तानोस्तन गिया मानु दिन्यान शापी कोन्यान थे तांत इबादत ते बिन्यान सहाई असरा बिजली रोस्ट बिजली हस्ता इस्पत फायदा हो पुष्टि रगिस्ट्री पोरोस्ता महान से दुंगाज जो बजा पद गई सियां दुमी सियां शो कोने का पेलेस कोने का कालीन कोने क्या दिगो उसबन दिया सब फायदा. With more time at hand, women can produce more thread, which is used in the weave of traditional fabrics like shoe and sharma, as well as carpets. These hand-loomed and hand-woven products have a reasonable demand in nearby markets and bring good profits. हानि से दी स्पा डोनेर गया उठता है वाल बैंगो है तुम्हारे सदर का गया उठता है स्पा होरो सादी तरीका 5 मेगावाट बिजली स्पा मशकी को तैयारी आसाम कि हमने जो बिजली स्पा सुशेनी वादी स्पा हैं कि बिजली हानि की ज़्यादा बोई हानि स्पा दिलचस्पी है बिजली उसमें बितिशर. With the knowledge of what electricity can do, women are eager to expand its application to achieve further benefits. पहाड़ पे हैं कि इस पर दुनिया खर्चा हता कर पैदा हो गया दुनिया खर्चा हाँ से अजीले किताब खर्चा बयान इनसी अजीले स्कूल फीस बयान इनसी अजीले ज़ापो खर्चा बयान शो मशीन पर ज़रूरत हते पाचे इसलिए सेंटर की होए इनको हते तात्रा हुनार शुनी हसे जे हर जंग बयान की बिजली ज़रिया बिजली हते ज़्यादा करूँगा नहीं हतरा इनको पाचे हते फायदा. This newfound confidence in their abilities has been enhanced by their recent exposure to the rest of the world through television. Reducing the feeling of alienation, it provides them necessary entertainment and expands the horizon of their imagination. क्या बात की स्कूल तो बस यहाँ राधो को से कि क्या बात की तालीम हासिल करता हूँ या डॉक्टर बसे या नर्स बसे या स्कूल मास्टर बसे क्या बात की इस पर जस्ट पास को से जस्ट पास कर इस पर तालीम व हासिल को कोनो बसे कॉलेज चढ़ने की वह क्या ना कर दी कि मास्टर से यहाँ तरह सब साना कंप्यूटर होते गया ना रे बच्चे आगन्या कंप्यूटर दिस पर क्या इस न बसे बिजली इस पर हाश को से क्या इम्तिहान दी कि दोस्त इस पर रिजल्ट क्या किसी ने आते बहुत ज़्यादा बितगोनिया. The ripple effects of such interventions have been felt in other parts of the world also. The model of the micro hydropower generation introduced in northern Pakistan has been replicated in Central Asia. Countries like Afghanistan are now rebuilding their communities using the same method of power generation. Draw a picture of book.
This school in Gulkin is a prime example of what the overall empowerment of these mountain people can achieve. Using advanced techniques for insulation and earthquake proofing, the construction of the school was funded entirely from the community's own resources. सबसे जो मेन चीज़ है वो है अवेयरनेस। हमारे जो एकेडियन है और दूसरे एनजीओज हैं उन्होंने हमें शऊर दिया, और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ के कम्युनिटी में है, लोगों में ये शऊर पैदा हो गया है कि ये काम हमने खुद करना है बजाय दूसरों की तरफ देखने के। सबसे बड़ी चीज़, और एक और मेन चीज़ ये है कि लोगों को हम पे एहतमाद है। एहतमाद क्यों है? यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है। उनको पता है कि हमारे जो बंदे काम कर रहे हैं उसमें खुर्द बुर्द नहीं है। Yes, Mr. Humayun, is the story old or new? The story is very old. Very nice. Let's look at this. Who will tell me? Is the story true or untrue? Who will tell me? Yes. The eagerness towards self-reliance is a testament to the confidence instilled in these people through the recent infrastructure and technology interventions. The success of these projects gives us a glimpse of the true potential in the collective spirit of the people and what can be achieved given the right inspiration and assistance. But to bring the mountain communities abreast with the rest of the world, there is still a long way to go.